Good afternoon, Namaskar, Sat Sri Akal, Salam Alaikum. Welcome everyone for the fifth session of Ambe International Facebook and YouTube Live. I'm coming to you live from Mumbai. मेरा नाम अमित है. I'm the owner of Ambe International. And इस कोविड के टाइम में हम लोगों ने ये सेशंस शुरू किए so that we can spread more information for you all. ये आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए, आप लोगों के ओवरव्यू के लिए हमने ये सेशन स्टार्ट किए हैं. We know that during this time everyone is struggling, right? मतलब we also for a long time we were under lockdown situation in Mumbai. अभी the good news is that things are opening up next week. पूरे देश में 21 मार्च से लेके अभी तक लॉकडाउन की सिचुएशन रही है. इंटरव्यूज तो बहुत दूर की बात है. हम लोग रिक्रूटमेंट और हमारे पास जो वीजाज आए हुए हैं उसका भी कुछ नहीं हो पाया है काम. सो द गुड न्यूज इज दैट नाउ वी आर गेटिंग ओवर दिस टाइम, है ना. अभी एंड में आ रहा है लॉकडाउन एंड टुडे इज द 75th डे ऑफ द लॉकडाउन. एंड द गुड न्यूज, वी हैव क्वाइट अ फ्यू गुड न्यूज टू शेयर विद यू टुडे. सबसे पहले तो द Ambe International office will be reopening on the coming Monday, which is the 8th of June. We will be opening only for token. We will not be open हर दिन हफ्ते का ऑफिस खुला नहीं रहेगा. Mainly because अभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं शुरू हुई हैं, वीजा स्टैंपिंग शुरू नहीं हुआ है. इसमें अभी भी टाइम लगेगा, probably till the end of June and July. Once that opens up, हमारा ऑफिस रेगुलरली ओपन हो पाएगा. बट ड्यूरिंग दिस टाइम आप हमारे साथ रजिस्टर करें. आप अम्बे इंटरनेशनल को मंडे से कॉल कर सकते हैं. हमारी टेलीफोन लाइंस विल बी ऑन. रजिस्ट्रेशन का लिंक इधर स्क्रीन के नीचे आप देखें. सो वी आर द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया विच इज डूइंग कॉन्टैक्टलेस रिक्रूटमेंट. अभी हम लोग जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हैं फिजिकल नहीं दिया करेंगे. आपको इस लिंक पे क्लिक करके ये लिंक भरना होगा जो कि हमारे डेटाबेस में डायरेक्टली जाता है, या आपको अपने मोबाइल फोन के कैमरा से QR कोड स्कैन करना पड़ेगा, using which you can go online and register with Ambe International without having to come to our office. जो भाई लोग हमारे साथ सिलेक्टेड हैं, आपके पासपोर्ट्स हमारे पास हैं फॉर वेरियस जॉब्स, उन लोगों को अगर हमसे संपर्क करना है तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज पे राइट एट द टॉप यू विल सी आवर व्हाट्सएप नंबर. आपको हमारा ईमेल एड्रेस दिखेगा, आपको हमारी लैंडलाइन नंबर दिखेगी. ऑल थ्री विल स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम मंडे. यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड फॉर ईच पर्सन वी विल give you an update on what is to be done. Right now, जैसे फ्लाइट्स बंद हैं और वीजाज इशू नहीं हो रहे हैं, there is no further action immediately. But कहीं कहीं पे जहाँ पे हमको मालूम है कि the countries have extended the visas, उन लोगों को हम लोग संपर्क करेंगे और उनको आगे की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे. So this is the first news we wanted to share with you for today. The second good news is that the recruitment has started again. ठीक है, बट रिक्रूटमेंट अब ई-रिक्रूटमेंट द्वारा होगा. तो जैसे मैंने बताया कि अम्बे इंटरनेशनल के साथ आप नीचे के कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिंक के साथ रजिस्टर करेंगे. वी आर एनकरेजिंग एवरीवन टू मेक देयर वीडियो रेज्यूमे, देयर वीडियो CV. ये 1 मिनट का वीडियो CV कैसे बनाना है उसका यूट्यूब लिंक इधर नीचे दिया गया है. आप मोबाइल द्वारा इसको आसानी से बना सकते हैं. बनाने में आपको 15 मिनट भी नहीं लगेंगे, पर एक बार आपने ये वीडियो रेज्यूमे बना दिया, ये हर समय के लिए रहेगा. और क्लाइंट्स इन वीडियो रेज्यूमेस को देख रहे हैं. इस समय में भी कंपनीज ने लोगों को स्काइप इंटरव्यू किया है और लोगों के सिलेक्शंस हुए हैं. So the first good news I gave you is that Ambe International is reopening. The second good news is that recruitment has started. हमारे पास इस समय भारी रिक्वायरमेंट्स हैं कुवैत से, जो कि आर फॉर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स, जिनके स्काइप इंटरव्यूज विल स्टार्ट बाय द मिडिल और एंड ऑफ जून, और फिजिकल इंटरव्यूज एंड जुलाई या फर्स्ट वीक अगस्त में टेंटेटिवली शेड्यूल्ड भी हैं. ये कुवैत के लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स हम आपको इस स्क्रीन पे भी दिखाएंगे और फेसबुक पे भी डालेंगे बिफोर द एंड ऑफ दिस सेशन. हमारे पास बहुत लोकल रिक्वायरमेंट्स हैं ओमान में, बहरीन में और कतर में. इसमें अभी इंडिया से रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, पर अगर आप बहरीन में हैं, कतर में हैं या ओमान में हैं तो आप प्लीज अम्बे इंटरनेशनल के साथ रजिस्टर करें. हमारे पास बहुत सारे जॉब्स हैं इन 3 देशों में. लोकली हमारे इंटरव्यूज हो रहे हैं, हमारे क्लाइंट्स कैंडिडेट से मिल रहे हैं, उनको हायर सैलरीज पे रिक्रूट कर रहे हैं. तो अगर आप इन 3 देशों में हैं और आप लोग लॉगिंग इनटू आवर सेशन राइट नाउ,
We are talking about jobs that Ambe International currently has in the Middle East and for candidates from India. For Kuwait, we have massive requirements for long term, which will start by the end of July. Skype interviews will start by the middle of June, and we will give you all the information on which positions and how to apply before the end of this session. For Qatar, Oman, and Bahrain, we have local requirements. जहाँ पे within, if you're already within Qatar, Bahrain, or Oman, and if you want to change your jobs, then we will show you how to apply. The third thing that we want to, the good news we have is that we have our esteemed clients from the Gulf, very, very large company, Inco, जिनको एक्चुअली ओमान में बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स मिले हैं, यूएई में बहुत काम हुआ है, and even we have been in partnership with them for a long time. We have recruited a lot of people with them. They take care of their people, लोगों की कदर करते हैं, सालों सालों हमारे कैंडिडेट्स उनके साथ खुश होके काम किए हैं, and they are joining us live from Dubai, where उनके पास बहुत इंफॉर्मेशन है about the Gulf market. के दो सीनियर मैनेजर्स हमको ज्वाइन करेंगे HR से और ऑपरेशन से, and they will also be giving us an overview of the Gulf market. We have requested them, we have told them that we have candidates who want to understand what is the situation over there. We have been doing these Facebook live sessions to help our candidates, and they have very kindly agreed to be with us. I want to welcome Hiral and Kansu. Mr. Hiral is a very senior manager who has a lot of knowledge about the Gulf market, about opportunities there in terms of projects as well as jobs. And Kansu has been with Inco, and she's in HR. She's a senior manager who has a lot of information and exposure to jobs. So, we are very fortunate to have both of them. Hiral, if I can ask you to start out, if you could maybe talk a little bit and maybe give us a presentation on what the Gulf market looks like. Okay, the common impact on COVID situation with all employees, whether in Gulf or outside of the Gulf, and from let's say March, April, May, this 3 month was almost collapse in the Gulf market, even in India also. But now situation is recovered. Slowly, let's say it's not 100%, but it's going very fast recovery. Let's say oil price was -2, -3. Just to inform, is -3 means if I want to sell oil to somebody, I have to pay them $3. So this was situation in somewhat in April or May month, but now situation is much more better. So I will just share my screen. I have some sort of presentation I just share with some clients. Maybe it will be helpful for your people who want to come to Gulf, and they need to understand what the impact is and how Gulf will recover so fast. So the people should enter the Gulf, not just for information. Okay, you can share. You can see my screen. Ji Hiral bhai, we can see your screen. Okay, I will start to speak on English and Hindi both, जैसे कि लोग समझ पाए more. Or Ms. Jansu, if you want to say something on COVID situation. Yes, I can start about COVID situation. I just want to talk about how it affects the recruitment process. Is that okay? I can start? Yeah, sure. No. Please. Yes. We are in oil and gas industry, and we are working different countries in the world. And as we know that COVID-19 affects all industries, especially who is working as the international area. Visa process stopped, so we couldn't bring the people, and
we need to find qualified candidates. Then we started to contact with who is living in UAE and Oman. But suddenly this location become important key for recruitment process. But we are asking COVID-19 test before to start this duty from selected candidates for to get visa. Also before, for to go Oman and UAE, we are asking medical reports. We are always saying this health and safety first. Not only for to enter the countries, also important for to understand your health status, because it will affect to other people's life. And which we said we are focused candidates status at the same time. We are contacting with selected candidates. We are checking their health status. We are making ready their all required documents. Only we are waiting flight dates and this visa processing. When this works start normal process, we can apply visas and we can book tickets. And this requirements will start. And we will start to bring the selected candidates. They will be priority for our recruitment process. And our project still ongoing. That means we are still looking qualified people. We are doing interviews. We are explaining future positions requirements. It's good advantage for us. During this COVID-19, we can be focused interviews for future positions. We will get new projects, sure, and for this dynamic, we need good people for our team. Also, it's good advantage for you, who is looking job. You can apply our post, and we can discuss our future positions. The agency already shared their email. You can directly send your CV to them. This COVID-19 affects our employment and recruitment process, but it doesn't stop. It's for all companies in UAE and Oman. So you need to get certificates, which is good for you for your career goal during this time. You need to improve yourself and focus which kind of work you want to work. When you're sure nothing affects even this pandemic. That's all from me. Yeah. Okay. Thank you, Ms. Jansu. So the message was that if you want to join the Gulf market, especially INCO, try to improve your skills. We are in lockdown and we are not move out. Let's say 2 months we cannot go abroad. Go to courses and 1-2 month courses that can help for contracting, for planning. Let's say Primavera, contracting, CCPM, or there is online courses for international business management courses. Improve your CV, improve your skill, because whoever will come now, they will come for good quality people who really require in Gulf. Okay, and let me share also just to get idea what's going on in Gulf. I think everybody see my screen, right? सब लोग screen देख सकते हैं. ओके सो ये ऑलमोस्ट मैंने बनाया था कुछ क्लाइंट्स के लिए. May end तक there was confirmed case of COVID was around 56 lakhs, 5 million cases, which is 56 lakhs Indian, and in treatment there is 29 lakhs Indian numbers. Means half of लोग recover हो चुके हैं already, और अभी काफ़ी अच्छी medicines है, the people can recover very fast. So one times will come
that the recovery cases now is 50%, and it will be 70%, and it will be 100%. Let's say expecting by end of this year जो कोविड सिचुएशन जो स्प्रेड हुई है वो कंट्रोल में हो सकती है. तो ये जब कोविड स्प्रेड हुआ था तो सिचुएशन क्या रही थी गल्फ मार्केट में? लेट्स से इन अप्रैल, मई और जून, it was partial lockdown. May it was complete lockdown. It's all over GCC. In June it was open, like partially they are opening. By mid-June they are opening. So what happened in GCC during this lockdown? The salary was reduced up to 50%. It was government approved, and the people were doing work from home, and people was in paid and unpaid leave. Now in this lockdown, the people has find the new technology to work. Let's say Microsoft and Adobe, they make joint venture. They are developing software. Like we are speaking on StreamYard, there is software like Zoom. There is a different kind of software who can share your laptop screen together with your bosses, and they can guide you how to work. There is a new software called Microsoft Task. It's available now. So what happened? The Microsoft Task is giving guidance to the candidates, even they are in India, even they are in abroad. So technology is coming that the people can work anywhere in the world, and they can get same output. Okay, these are the country-wise where the COVID cases were higher. Iran was higher, of course. Then Saudi was second higher. Then Qatar, Egypt, Bahrain. This was up to May end. Now situation can be changed also. But of course, this can be covered, sure. Now how it will affect on global market, let's say our economy. So we will have strong economy here in the worldwide. All the economies are going down in minus. So the countries like India, we had high chance that our economy will go up. Economy will go up means not only what people is coming India, it's depend on how capital income people are getting. So for example, people want to go abroad and get job. So here it's including here also, like 2.1% is the average scenario, and 4.9% is a high estimated scenario. So people who want to go abroad and get job and give money back to India, it's also included here. So there is chance high, let's say people, 4 lakhs people, 6 lakhs people will go back to India in next 1-2 months. But same people will go back abroad again in 1-2 months. So the agencies like MBA, they can help the people to go out. Okay, let's say crude oil prices. Now crude oil price as of now is $38. It was almost, as I told you, 20, and it was minus also. So we covered 3 months, March, April, May, now we are June. So our prices of oil is 38.97, let's say almost 39 or 40. So it's a good sign that market is recovering very fast. If you see from May to June, market has recovered very fast in GCC. Oil price और GCC का डायरेक्ट कनेक्शन है. जैसे ऑयल प्राइस ज़्यादा होता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट अनाउंस होते हैं और बहुत सारी जॉब्स अनाउंस होती है. तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई जुलाई और अगस्त में ऑयल प्राइस अच्छी हो जाएगी, एंड देयर इज अ मिलियन ऑफ जॉब मार्केट में आउटपुट होगी. दिस आर द सम कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड. ऑफ कोर्स अगर हम देखा जाए जनवरी टू मे मंथ में 2015 से 20 तक एनालिसिस किया जाए, there is a 28% decline of projects it was so far, and because of this lockdown, as I told you, March, April, May was complete lockdown in GCC, and there was no major project announcement in this 3 months. If you see the sector wise, अगर आपको यहाँ पे अपनी skill check करनी है, for example, if you are in construction, there is market down, of course, but if you are in let's say gas, you work in gas field, there is a lot of jobs still there because project announced हो चुके हैं gas के लिए. Then oil is minor, not much, but yes there is. But power काफ़ी अच्छा जा रहा है. let's say transport भी अच्छा जा रहा है. water projects भी एवरेज ठीक जा रहा है. इश्यू मेनली हो रहा है यहाँ पे केमिकल सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में. ये दो सेक्टर में जो भी काम कर रहे हैं, either they have to make multi skill to go to other sectors, and main chances if you have good in power, because waste to energy projects, power plant काफ़ी अनाउंस हुए. और अच्छी बात यह है कि लास्ट 3 मंथ जैसे ही ये लॉकडाउन हुए अलग अलग कंट्रीज में, तो there is a requirement of water was increased around 20% in all over GCC.
So new water projects are already announced, and still more projects need to announce in market. So let's see. Okay. और ऐसा नहीं है कि अप्रैल मई में there was a complete lockdown और कुछ काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं है. There was quite good project was announced. Let's say Block 7 Academic Campus Abu Dhabi 1.8 billion के projects announced हुए. ये सब अप्रैल मई मंथ में, जहाँ पे पूरी ग्लोबली वर्ल्ड में लॉकडाउन था, पर ये 2 मंथ में अबू धाबी में काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए. देयर इज जुबेल वाटर प्लांट. एज आई टोल्ड यू, देयर इज वाटर डिमांड इज इंक्रीजिंग. मतलब लॉकडाउन रहने दो, पर लोग 3 बार नहाएंगे लोग अच्छे वाटर कंज्यूम करेंगे, तो वाटर डिमांड इज इंक्रीजिंग. अच्छे वाटर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो अपनी स्किल को ऐसे डेवलप करो कि यू कैन वर्क ऑन वाटर सेक्टर्स एज वेल. वाटर सेक्टर में क्या होता है, आरओ प्लांट, रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट, DMPFSL equipment, or duplex piping. You can highlight these things when you apply in position of water sectors. Companies like Acciona, Hyflux, ऐसे companies में अच्छे requirements है अभी भी. So let's say overall अच्छे projects announce हुए हैं. Almost 3 billion के आसपास project अप्रैल मई मंथ में announce हुए. There is no 100% GCC में कोई लॉकडाउन हो गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई, ऐसा भी नहीं. स्टिल प्रोजेक्ट्स आर देयर. अभी ये अच्छे प्रोजेक्ट्स है जो पाइपलाइन में है, मतलब टेंडर्स आर देयर, EPCs आर देयर, एंड वी गोना वर्क ऑन दिस. लेट्स से फॉर GCC में कतार काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है. अराउंड 20 बिलियन प्रोजेक्ट्स आर देयर, एंड LNG train is there. So Ambe International is following this project. Share the CVs with them, and we are also called PPP. So government's investment is become less because all the prices depend on oil price, and oil price is fluctuated until next 2 months, and investor need to get confident. जो PPP प्रोजेक्ट है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है. तो ये रेपको रिन्यूएबल एनर्जी जो प्रोजेक्ट है 7 बिलियन का सऊदी में आ रहा है, वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है. तो ये सब प्रोजेक्ट्स गो अहेड होने हैं, मतलब इसके टेंडर बाहर हो चुके हैं, EPC बिड कर चुका है. ये सब प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. यू हैव टू टारगेट सम ऑफ. अभी सब लोग पूछते हैं कि ये सिचुएशन कब तक ठीक होगा. I think we're losing Hiral Bhai's voice, so we'll wait for him to come back up. In the meantime, for those of you all who have just logged in, I want to tell you that we have our partners from Dubai, our esteemed clients Inco, Kansu ma'am, and Hiral, who have joined us for this Facebook Live and YouTube Live session. We want to welcome all of you all over here. Inco is, a company which has received massive projects in the Middle East, and they are going to be recruiting towards the end of the year. So, we have invited them kindly to talk to us about their requirements. So, Kansu ma'am, when do you think recruitment for the Middle East will be able to restart, you think? It's already restart. We need to contact with qualified people. And it's also important right now, we have time and we can be focused for these interviews, which is important in recruitment process. Also, you can, also we are doing technical interviews
and our career page. They can follow us from LinkedIn, Inco Group of Companies, and they can see our recruitment process, and of course they can contact with you for to know future positions. Of course, recruitment still continue, and just what we need a little bit patience, because still visas and flights not open, and it's still we are waiting information. But that time we are contacting with people with face-to-face, not face-to-face interviews, like online interviews and telephonic interviews, and we are keeping in our records. That means which is important for future positions. We are keeping and we are contacting with them. When everything is fine, we will focus which we did interview and which we selected disqualified people. Then we will bring immediately them to Oman and UAE projects, I'm sure. Superb, Kansu. So, glad to hear that you all are also using electronic recruitment. We are using LinkedIn and the website. Rajender, if we could have the URL on the screen also, so that candidates can look at the URL. In the meantime, I also wanted to ask you, Kansu ma'am or Hiral, how do you see things restarting in terms of the kind of industry and the trades which will come first, in terms of either design or in terms of civil or mechanical, and how you see that happening further? Yeah. Good. I think Kansu ma'am, we have the LinkedIn which you could just tell the candidates about, please. Yes, you can follow from LinkedIn, or this is our official page, and you can know for future positions, and you can see the updates. Superb. Hiral bhai, if you could maybe talk about the civil, mechanical, electrical design, what do you see happening when things do restart for people looking for jobs? Yeah, so look like, as I told you, water projects and power projects are on priority. That GCC or other countries' demand is increasing on this. So these sectors will come up. So people who work on these sectors, they have very high chance that they can regain this job with good salary in GCC. So trade-wise, let's say, I will not fix on any trade, but let's say mechanical trades are much more required than now civil and other hotel sectors, because mechanical mainly involved in power and for waters, even in gas. Let's say Qatar LNG, better. This project has to come up. So if we see priority, water, power, and gas, these three sectors who work, they have to just improve their skill. They have to get some more idea how to use technology, and look like they will get it more. Thank you for rejoining us. I know you had some problem with connectivity also. आपकी presentation बहुत बढ़िया थी हिरल भाई. I think it's an eye opener for a lot of us, and especially for our candidates. The number of candidates has already exceeded 8,000 people who are viewing our video right now. So for their sake, I would like to repeat, that we are here with senior members of INCO, where we are discussing the job situation in the Gulf region after COVID. They have already given us a very nice presentation on what they see happening in the economy, the number of infections, which countries will rise, which trades will rise. And if you want to register with us for jobs, you can look at the link below, using which you can register with us for jobs. Hiral bhai, I think one more question for you would be, in terms of jobs in by country. You've already said that Qatar, you see something massive happening. If you could also just touch upon the UAE market and what you see happening over there in the next few months. Let's see, if we go priority wise, which countries will open first, which countries will have job requirement bulk wise. So I see that first, of course, Qatar is booming up with high project.
So requirements will go there. Then Kuwait is opening with massive plants again. So look like Kuwait economy also strong. And third, if lockdown will open, everything will open. Saudi is going with massive project. They have already project, but since lockdown, they stopped many companies to work, or many people has go back. But in GCC, Saudi always hold many projects. Look like Saudi will go back again in end of this year, but because they have already took the lockdown more and the cases are more, but they will take some measures. It will take some time to go back Saudi. In terms of UAE, there is one Hail and Gaza projects are coming. It's around 6 to 8 billion. The bid is going on, and this project will announce by end of this year. So this will generate massive requirements here. Apart of this, some power plants are coming in Tawila area. Plus small projects are coming in Fujairah F3 power plant. So these are the projects are there that in line, and it will announce by end of this year or early next year. So let's say immediately, if you target something, immediately you should target Qatar and Kuwait by July and August. August and you should target something in Saudi and UAE market. That projects are opening around that area. Yeah. Superb. And how advice do you have for almost 8,000 people who have logged in, yourself and Kansu ma'am? I'd like ending comments from you all. You must be seeing the questions we are getting on the right hand side. We are suggesting to candidates during this time that please, number one, adopt key methods of recruitment and do training. But if you could also give some parting advice to them, on how to look for jobs after the situation improves. Yeah. So from my side, I will tell first. Then let Mrs. Chansu tell their opinion because they are mainly on HR. So my side, just I want to tell that once after COVID, situation will open. Situation not like before. Like once you have a twister in your around country, you will make home more strong. And you have earthquake, make some home with more concrete. So when COVID pass, we will make the situation like who know the technology, who has the superior skill. They will be invited first. Like people ages 60 plus, they have to work on Zoom. They have to work on StreamView or something. Technology era, let's say. People should know the technology era. This will be first. And second, extra multiple skill. Let's say if I need engineer, I will look engineer who can work me for admin also, who can work for HR assistant also. So it's not like limited. Now you have to go out of your well and see what others are doing. Do the multiple. So this kind of skill will help the people. Now Johnson was better. Yes, Miss Jansu, you would like to say something? Yes, I can say. In this time, these engineers, special engineers, and also other positions, they can improve their CVs and they need to do network. This is, I am just saying, they can take advantage because I'm sure people trying to contact with managers and HR. They can be focused at one. They can use these social platforms for to see and for to know the people. So that I mean, network is important, and they need to know which company they want to work, and they need to search this company's specific projects and what their requirements. They can update their CV, and which you said, it's also important, this technical certificates. After this COVID outbreak, I mean, when it started this flies, yes, firstly, this specific certificates who has from these people will start, then others also will continue, I am sure. Also, I see some of questions. If you don't mind, I can give answer. You were asking in Oman, where is the
cities we are doing projects. Our Oman office in Sohar, and we have projects in Salalah, in Dukum. In Dukum also we have 4 package. Just I can say I saw this question, and I am seeing also is there any vacancy for civil engineering? Of course, for future positions, who has mechanical backgrounds and who has engineering background, we can consider. But right now, you should update your CV. You should send your CVs, and after reviewing and everything is fine, it will start. This recruitment will start. I mean, like that from my side. Thank you, Hiral Bhai and Kansu ma'am. So, Hiral Bhai, what you said, multi-skill, I think, will be the name of the game. You want Yeah. specialists, but you also want them to have other skills so that, people can perform multiple jobs, Yeah. which is a little different from how it used to be. Earlier, specialization used to be valued more. So, it's very interesting that you're saying that. Yeah. Because everybody is on cost saving now. Once after COVID start, everybody need to back on profit margin that we used to make in 2019-18. So only the people with high productivity, high skills, and who have good certification, this will be the key. And of course, they will lead. And do you think this is true even at the worker level, Hiral Bhai? So, we have a lot of questions about safety officers and document keepers. These positions also, you think they need to be reskilling and looking at adding more skills to their portfolio? No, for labor categories or mid staff category or low staff category, I suggest to improve their skill. For example, if there are a document controller, there is a software training on SharePoint, on VC Docs. So this kind of certificates, if they are fitter, they have to go for a national training program certificate that under you know the better. So if lower categories, they have to improve their skills, not to go for multiple, because it's not required even. But, multiple require engineers and above, and below that they have to go to improve their skill. Online certifications are there, online trainings they are there, so they will be preferred, because once market will open, it will be open for only people who is high skill, high qualified, and then it will go to all people. So if you want to select early, you have to improve yourself with high salary. Tremendous. We are also in this time, Kansu ma'am, we are advising candidates to, even at the worker level, to pick up a little bit of English and make their CV. Yeah. So can you provide some advice around that also to our candidates and why that is important? This series updates, you mean? Yes, ma'am. In recruitment process, first things, this CV, they need to put their clear photo, and they need to mention their career goal and experience details clearly. Actually, if we are gonna be honest, we are not reviewing like 10-page CVs. CVs must be maximum 2 pages and must be clear. I can give this kind of advice. Super. Thank you, Hiral Bhai. Thank you, Kansu, for joining us for this session. It's been our privilege that you could join us. As you're seeing, questions are unending, and unfortunately, we can't keep answering them all the time. But we will, in some of these answers, keep answering questions for candidates for the next 15 minutes. If you like, please hang around, and if you can help us also answer some questions, then you can also participate. Rajinder, if we could put up our current Kuwait requirements, so that we can tell candidates of the new shutdown requirements that are now going to come up.
So अभी दोस्तों हम लोगों ने इंको के सीनियर मैनेजर्स हिरल भाई और कांसू से बात की. We quickly just want to tell you that we have massive requirements for Kuwait starting at the end of the year. जहाँ पे Skype interviews will start by middle of June, and by September the mobilization is expected. ये सब आपको हमारे Facebook feed पे दिखेंगे. Rajendra, if you could show it on our screen as well, please. So I want to also, while Rajendra pulls up the screen, if I could just say thank you to Hiral Bhai and Kansu. Okay. Hiral Bhai, Kansu, thank you so much for joining us. It's been our pleasure. You can make out from the response from the candidates, there are 250 plus candidates logged in right now, and we have already had 8,000 plus views. A lot of questions are coming in. If there are some interesting questions specifically about Inco, we will send it to you as a follow-up, and if you could help us answer those as well. Surely, Any yeah. parting messages for our candidates, Hiral Bhai and Kansu? No, thank you from my side, and look forward to see back all in Gulf again if they are back from Gulf due to COVID. Just look forward to back them again in Gulf. Of course, you are the one of our partner from last 10 years, so just we want your support also to take them in. Okay. Let's hope the situation helps all of us, Hiral Bhai. Those words mean a lot. Kansu, any parting words from you for our everyone logged in right now? Firstly, thank you for inviting us this live session. It's good to contact with people, and it's good to see their questions also. They need to focus their career goal, and they need to continue. I am just saying recruitment didn't stop. It's still ongoing. From my part, like that. Thank you. Thank you, Hiral Bhai. Thank you, Kansu, for joining us. Hopefully, we'll get to see you soon, and recruitment starts. We'll get to see you in India as well. Okay, sure. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. For all those who are logged in right now, हमारा Facebook live session अभी हम लोग जारी रखेंगे. We are now going to show you. अभी आपको हम लोगों ने Inco के company representatives थे जिनके साथ बात करवाई. They have come in from Dubai. They had logged in only to give us the overview that they did. जो भी logged in था, they gained a lot of information. Now, before we end the session, I do want to show you our requirements. जो कि हमारे पास कुवैत के बड़े रिक्वायरमेंट्स आए हैं. ये सितंबर में मोबिलाइजेशन है. इनके स्काइप इंटरव्यूज आर गोइंग टू स्टार्ट दिस मंथ इटसेल्फ. All maintenance mechanical requirements, which includes maintenance planning engineers, machine shop engineers, rotating mechanical rigging supervisors, heavy equipment mechanic, auto electricians, bench fitters, rotating equipment mechanics, welders, fabricators, riggers, scaffolders, operators, and tiremen. मतलब सारांश में आप समझें, हर जो मैकेनिकल पोजीशन मेंटेनेंस में लगती है, जो आप सोच सकते हैं, वो हमको रिक्रूट करना है. दिस इज फॉर ए कॉन्ट्रैक्टर डायरेक्ट विद केएनपीसी. ये रिफाइनरी का काम है. इसमें लॉन्ग टर्म काम है, ये शॉर्ट टर्म काम नहीं है. This is for Kuwait. As we said, the shutdown, the project is fixed for mobilization in September. और ये हमारा पहला हम लोग जो बड़ा प्रोजेक्ट टेकअप कर रहे हैं आफ्टर कोविड. द टाइटल ऑफ टुडेज सेशन वाज गल्फ जॉब्स आफ्टर कोविड. सो आप समझे हमारी बात कि दिस इज द फर्स्ट मेजर प्रोजेक्ट व्हिच वी आर अंडरटेकिंग. हमारे पास दूसरे देशों में भी कई रिक्वायरमेंट्स हैं, बट दे आर ऑल लोकल रिक्वायरमेंट्स. दे आर रिक्वायरमेंट्स फॉर कैंडिडेट्स हु आर इन दैट कंट्री. So that is for Bahrain, Qatar and Oman. If you are in these countries, we have a lot of requirements. पर ये जो अभी आपको स्क्रीन पे इस समय दिखाया जा रहा है, this is for Kuwait. It is a long-term requirement. And any mechanical maintenance positions में अगर आपके पास experience है, refinery shutdowns या refinery maintenance में आपके पास experience है, Gulf में आपके पास experience है, so please आप immediately हमको अपने CVs आप email करें. आप व्हाट्सएप कर सकते हैं.
नीचे आप देखेंगे हमारे मल्टीपल मोबाइल नंबर्स हैं, मतलब ऑलमोस्ट हम लोगों ने 6 नंबर्स दिए हैं, क्योंकि दीज आर मैसिव रिक्वायरमेंट्स। जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक्चुअली हजारों में हैं। तो आप इन नंबर्स पे कॉल करें, अपना सीवी भेजें, हम लोग शॉर्टलिस्टिंग करेंगे, बट थोड़ा धैर्य से काम लें, ठीक है, क्योंकि ये मोबिलाइजेशन इज फॉर सितंबर। फॉर द नेक्स्ट 1 month वी विल बी डूइंग शॉर्टलिस्टिंग। इफ यू सेंड इन योर सीवीज वी विल नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड 1-to-1। आपको 1-to-1 हम ना ही फीडबैक दे पाएंगे, ना ही आपको ईमेल कर पाएंगे, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग मैसिव फीडबैक फॉर दिस। पर आप प्लीज सीवी भेजें, और अगर आपका शॉर्टलिस्ट हो रहा है तो आप बेफिक्र रहें। We will be getting back to you because we are interested in recruiting you for this. That is why we have come online today on a Saturday. And once we have shortlisted you, the Skype interviews will start by mid-June to end June. फिजिकल इंटरव्यूज अभी श्योर नहीं है, क्योंकि ये कोविड के टाइम में आपको भी मालूम है सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स कब शुरू होंगी, ये सब अभी भी क्वेश्चन मार्क्स हैं। तो एक बार ये सिचुएशन क्लियर हो जाती है, फिर हम ये भी अनाउंस करेंगे फेसबुक लाइव पे आके कि कब इंटरव्यूज होने वाले हैं। एंड अगर फिजिकल इंटरव्यूज होने वाले हैं तो आप सबको सूचना मिलेगी ही मिलेगी। आप देखेंगे नीचे स्क्रीन के बिल्कुल नीचे आप देखेंगे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिंक है, ठीक है। ये अंबे का कॉन्टैक्टलेस रिक्रूटमेंट लिंक है। इसमें अगर आप रजिस्टर करोगे ना तो फिर आपको ऑटोमेटिकली हम लोग जॉब अलर्ट्स भेजेंगे व्हाट्सएप और एसएमएस द्वारा। और इसमें जैसे हमने अभी हम आपको कुवैत के जॉब्स दिखा रहे हैं, आप अगर कॉल करोगे तो हमारे रिक्रूटर्स भी पिकअप कर पाएंगे कि नहीं, कितने उनको भी कॉल्स आ रहे हैं। इससे बेहतर है कि आप नीचे के कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिंक पे आप रजिस्टर करें। अगर आप रजिस्टर करते हैं ऑटोमेटिकली हमारे डेटाबेस के अंदर जाता है, और जैसे ही हम लोग जॉब में कीवर्ड टाइप करेंगे आपका सीवी और आपका जो रजिस्ट्रेशन है ऊपर आ जाएगा। आपको ऑटोमेटिकली एसएमएस भी मिल जाएगा कि कब इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं। कुछ हमारे जो भाई हैं अभी फेसबुक में काफी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि अंबे का ऑफिस कब शुरू हो रहा है। देखिए भाई, ऑफिस तो हमारा मंडे से ही शुरू हो रहा है एक्चुअली, बट हम लोग अभी किसी भी कैंडिडेट को नहीं बोल रहे हैं कि आए, क्योंकि अभी ना ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स ओपन है, ना ही वीजा स्टैंपिंग ओपन है। तो अभी अगर आपका सिलेक्शन हुआ भी है किसी चीज के लिए, आप प्लीज अंबे इंटरनेशनल को कॉल करें या व्हाट्सएप करें, और हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे कि कैसे आगे बढ़ना है। हमारा ये अनुमान है कि थिंग्स विल ओपन अप ओनली फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई इन टर्म्स ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ कैंडिडेट्स व्हेन द इंटरनेशनल फ्लाइट्स ओपन अप। पर ये अनुमान है, ये श्योरिटी की बात नहीं है। However, as our clients from Inco also said, हमारे रिक्रूटमेंट्स चल रहे हैं इस समय। अगर आप बहरीन, कतर या ओमान में अभी लोकली अवेलेबल हैं, अगर आप इस समय ओमान में हैं, कतर में हैं या फिर बहरीन में हैं, आपके पास जॉब नहीं है या फिर आप विजिट वीजा पे हैं या फिर आप अपना जॉब चेंज करना चाहते हैं, प्लीज रजिस्टर विद अस ऑन द लिंक बिलो। बिकॉज हम लोग ने पिछले 4 हफ्तों में वी हैव मेड एटलीस्ट 50+ प्लेसमेंट्स इन दीज कंट्रीज लोकली। कैंडिडेट्स जो कि सोच रहे हैं कि हमको अरे बाप रे हमको वापस आना पड़ेगा, हमारे पास जॉब्स नहीं है, वापस जाके हम क्या करेंगे, आप हमारे साथ रजिस्टर करें। लोकली इन 3 कंट्रीज में हमारे रिक्रूटमेंट्स चल रहे हैं। अभी स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है ये है कुवैत के रिक्वायरमेंट्स। कुवैत के रिक्वायरमेंट जो कि सितंबर के मोबिलाइजेशन के लिए हैं, ये लॉन्ग टर्म है और इनके इंटरव्यूज स्काइप द्वारा शुरू होंगे नेक्स्ट 2 हफ्तों में। इंटरव्यूज स्काइप द्वारा होंगे, और फिर अगर क्लाइंट के साथ और इफ द पॉलिसीज ऑफ बोथ द गवर्नमेंट्स, कुवैत गवर्नमेंट एंड इंडियन गवर्नमेंट अलाउज, तो एंड जुलाई या फिर फर्स्ट वीक अगस्त में फिजिकल इंटरव्यूज भी होंगे। इसमें ईमेल एड्रेस है mechanical@indianpersonnel.com, इधर अपना सीवी भेजें और हमारे साथ जो नीचे रजिस्ट्रेशन लिंक है उसके साथ रजिस्टर करें। Now next I would like to talk to you about local requirements we have in Bahrain, Oman and Qatar. If Rajender, we could please show those requirements also on the screen. तो ये requirements अब हम आपको दिखा रहे हैं ओमान के लिए। अगर आप इस समय ओमान में स्थित हैं, आपके पास जॉब नहीं है, आपकी कंपनी आपको बोल रही है वापस जाएं क्योंकि काम नहीं है, या फिर आप विजिट वीजा पे हैं, और अगर आप लोकली अवेलेबल हैं, आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो फिर आपको एनओसी लगेगा। अगर कंपनी आपको वापस भेज रही है तो फिर आप कंपनी को बोल सकते हैं कि इसके बजाय
मैं जॉब ढूंढ लूं तो फिर आप मुझे एनओसी देंगे क्या, और जो विजिट वीजा पे है वो भी अप्लाई करें। ये सब रिक्वायरमेंट जो भी आपको दिख रही हैं, वेल्डर की, कैम्बॉस की, पाइप फिटर की, इलेक्ट्रिशियन की, एल्यूमिनियम फैब्रिकेटर की, पाइप स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर की, दीज आर लाइव रिक्वायरमेंट्स इन ओमान राइट नाउ। अगर आप ओमान में स्थित हैं, आपके कोई फ्रेंड्स हैं ओमान में, उनकी मदद कीजिए, उनको ये मैसेज पहुंचाइए। ये जो स्क्रीनशॉट है ये हमने अभी फेसबुक पे भी डाला है, ये प्लीज इनको फॉरवर्ड करिए। जो ईमेल एड्रेस है oman@gulfpersonnel.com, ये हमारे अंबे का ही पार्टनर ऑफिस है ओमान में, जहां आप अप्लाई करेंगे तो फिर लोकली हम आपसे बात करेंगे, लोकली आपका इंटरव्यू का प्रावधान करेंगे। लोकली हम लोग ट्रेड टेस्टिंग भी हो रही है, ओमान के अंदर प्लेसमेंट्स भी हो रहे हैं। कई कंपनीज इस समय में लोगों को बोल रही हैं वापस जाओ, निकाल रही हैं, लाखों में निकाल रही हैं, पर हमारे पास पोजीशंस भी अवेलेबल हैं जहां पे कंपनीज बोल रही हैं कि हमको हायरिंग भी करना है। सो दिस स्क्रीनशॉट शोज यू लाइव जॉब्स इन ओमान। इफ यू आर करेंटली इन ओमान और इफ यू हैव फ्रेंड्स इन ओमान, प्लीज पास दीज रिक्वायरमेंट्स ऑन टू योर फ्रेंड्स। अरुण देसाई साहब जो फीड में है वो बोल रहे हैं आई कैन सी देयर आर नो वैकेंसीज फॉर इंजीनियर्स इन ओमान। देखिए हमारे पास जूनियर सिविल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट्स हैं, या फिर आपके पास अगर शटडाउन, हाँ अरुण जी, so vacancies for engineers, we do have junior civil engineer requirements for 2 companies, and अगर आपके पास mechanical engineer maintenance में है तो प्लीज अपने CV भेजें, and we will see how best to help you out. Javed Sheikh is asking, do we have vacancies in retail? भाई देख, जैसे अभी हम लोग we were talking to Inco clients also, retail, hospitality, इनके जो रिक्वायरमेंट्स होंगे बहुत दिनों के बाद आएंगे, ये स्टार्टिंग काफी दिनों के बाद होगा। अभी रिक्वायरमेंट्स गल्फ में रिटेल में आपको ज्यादा नहीं मिलेंगी। अमजद भट्टी साहब पूछ रहे हैं अगर कैम्बॉस की रिक्वायरमेंट्स हैं। कैम्बॉस की रिक्वायरमेंट्स हैं, especially if you are locally available in Oman or Qatar or Bahrain, आप immediately please call us, right? The telephone numbers that you saw on the screen for Oman, आप immediately उनको call करें। If you are in Oman right now, you can see the requirements, उसमें कैम्बॉस की requirement है, please immediately apply करें। या फिर telephone numbers, if you can scroll down, you should please apply to oman@gulfpersonnel.com, and you should call the categories below, the telephone numbers given below. Nandush ji पूछ रहे हैं any local vacancies in Kuwait? 110%। नंदुश जी, जो कुवैत के हमने अभी रिक्वायरमेंट्स दिखाए थे ये हमारे फेसबुक फीड पे भी हैं, प्लीज कॉल दोज नंबर्स, वी कैन गेट यू लोकली रिक्रूटेड इन कुवैत आल्सो, because the client who's going to recruit in September, if we can give them candidates locally available in Kuwait, they will happily take them. आप locally समझें, we have massive requirements in all these 4 countries. So if you're locally available in the GCC and you're just tuning in, please note that we have a lot of requirements in Kuwait, Qatar, Oman, Bahrain. All these 4 countries we have massive requirements. ओमान के रिक्वायरमेंट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अगर आप ओमान में इस समय हैं और आप एनओसी प्राप्त कर सकते हैं या फिर आप विजिट वीजा पे हैं, प्लीज कॉन्टैक्ट अस फॉर दीज पोजीशंस इमीडिएटली। If we could now show Qatar requirements, Rajinder, then let us talk about local Qatar requirements. These are requirements currently in Qatar. Again, these are for local candidates. If you're currently available in Qatar, right? HVAC, electrician, pipe fitter, showroom, plumber, mechanical helper, cleaners, and even for civil. If you are locally available in Qatar, you can get a NOC or you're on visit visa or your company is asking you to go back to India. Please contact us immediately. Please send your CV on qatar@gulfpersonnel.com or call us on WhatsApp us on the numbers given over here. Again, for your benefit, for Qatar, we have massive local requirements, just as we do in Oman and Bahrain. If you are currently in Qatar या फिर आपके दोस्त हैं जो कि इस समय कतर में बेस्ड है जिनको NOC मिल सकता है, ये आप प्लीज इनको इधर इमीडिएटली कांटेक्ट करें। जो नंबर दिया है, व्हाट्सएप दिया है, और एंड qatar@gulfpersonnel.com. I'll explain to you, आज भी हमारे 2 कंपनी में इंटरव्यूज हुए हैं। आप ये बात हमारी समझें। लोगों को लगता है कि कोविड का टाइम है, हम लोग जो जॉब्स डाल रहे हैं वो फेक हैं और हम लोग एक्चुअल रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं। भाई, अंबे इंटरनेशनल 40 साल से रिक्रूटमेंट कर रहा है और हमने 3 लाख लोग प्लेस किए हैं।
हम लोग क्लाइंट्स को लेके आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए, इसलिए नहीं कि हमको कोई इंटरेस्ट है आपको फेक जॉब्स देने में, हमको इंटरेस्ट है कि आपकी हेल्प हो और हमारा रिक्रूटमेंट हो, हमारी कंपनी चलती रहे। कोविड टाइम में हम आपकी मदद करना चाहते हैं सो दैट यू कैन गेट अ जॉब, हम अपनी मदद करना चाहते हैं सो दैट वी कैन ऑल्सो अर्न सम मनी। आज भी हमारे कतर में 2 इंटरव्यूज हुए हैं जिसमें वी हैव अ प्लेसमेंट ऑफ अराउंड 12 पीपल। These are for all these categories which you are seeing over here, which is for light and heavy duty drivers, HVAC technicians, electricians, van salesmen, cleaners, mechanical helpers. ये सब positions हैं. The only key is that you should be able to get a NOC from your current company. और ज्यादातर clients कतर में भी बोल रहे हैं कि हमको physical interviews करने हैं। तो अगर आप कतर में अवेलेबल हैं या फिर आपके पास कतर में फ्रेंड्स हैं जो कि जॉब्स ढूंढ रहे हैं, प्लीज पास देम दीज रिक्वायरमेंट्स। And last, let us also show be able to get your NOC. अगर आप NOC नहीं प्राप्त कर सकते तो फिर कुछ पॉइंट नहीं है। और क्वेश्चंस मुरली रंगीनेनी पूछ रहे हैं एनी ओपनिंग्स फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर। अगर आप लोकली अवेलेबल हैं मिडिल ईस्ट में तो यस वी डू हैव रिक्वायरमेंट्स राइट नाउ, बट इफ यू आर करंटली बेस्ड इन इंडिया तो फिर अभी रिक्वायरमेंट्स अपने पास ज्यादा नहीं है। Safety officer in Qatar, yes we do have. If you're currently available in Qatar or if you're currently available in Oman, we can get your interview done immediately, वरना आपको थोड़े दिन रुकना पड़ेगा क्योंकि अभी recruitment from India ऐसे start नहीं हुआ है। Nagarajan Saab has worked in Aramco as a PMT engineer. Very good. See, we don't have current requirements in Saudi. We do have requirements for painting and blasting and coating engineers. But please अपना CV हमको पास कर दें mechanical@indianpersonnel.com, and as I said you will go directly into our database and we'll try and help you out. Sudhir Singh बोल रहा है I'm right now in Oman but I have not job and my designation is pipe and structural fabricator. तो सुधीर जी आप immediately अपना CV भेजिए oman@gulfpersonnel.com पे, ठीक है। आपका स्पॉन्सर कौन है और वो आपको एनओसी देगा कि नहीं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। अगर आप एनओसी प्राप्त कर सकते हैं, वी हैव एक्चुअली 2 रिक्वायरमेंट्स इन 2 डिफरेंट कंपनीज लॉन्ग टर्म के लिए, वो भी मतलब हम आपका 3 दिनों में प्लेसमेंट कर सकते हैं ओमान के ओमान में। तो प्लीज इमीडिएटली सेंड योर सीवी टू oman@gulfpersonnel.com एंड वी विल ट्राई एंड हेल्प यू आउट। मेक वेब, ये नाम नहीं होगा आपका बट आपने यूज किया है, नो प्रॉब्लम। currently located in Oman and working I'm into software industry. So see, right now we don't have a specific requirement for anyone in the software industry, but my request is if you could send your CV to oman@gulfpersonnel.com, we will parse it and it goes into our database, and whenever we have a position which suits your background, we will try and get in touch with you. That's the best we can offer at this point in time. Najmul Sheikh Jha बोल रहे हैं रिगर कुवैत 29 अगस्त लास्ट है, तो भाई इमीडिएटली आप अपना सीवी भेजें हमको कुवैत के लिए। जैसे हमने बोला कि हम लोगों को सितंबर में मोबिलाइजेशन चाहिए, तो आपको परफेक्ट सूट करेगा। आप हम आपको लोकली ही इंटरव्यू करवा देंगे और मे बी आपको अगर आपको रहना है और वापस भी नहीं आना है वो भी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। आपने बोला कि आप MECC में हो, MECC अगर हमारे थ्रू गए या जिसके भी थ्रू गए, अगर वो NOC देने को तैयार हैं तो हम आपका लोकल इंटरव्यू करवा देंगे, और ये इंटरव्यू तो नेक्स्ट 1 हफ्ते में ही हो सकता है भाई। नागराजन जी saying I'm available in Oman with NOC, 15 years experience, PMP, PMI in oil and gas projects. See, we don't have a project management job, but we do have contract and procurement requirements. If it's something you're interested in, we'll get your interviews done, Mr. Nagarajan. So my request is, sir, if you could send your CV to oman@gulfpersonnel.com, we will talk to you and we'll see if we can position you for a contract manager job. Project manager right now, unfortunately, we don't have.
गावस्कर जी बोल रहे हैं, नाउ आई एम इन इंडिया, इज इट पॉसिबल टू गो अब्रॉड आफ्टर लॉकडाउन? गावस्कर जी देखिए, जब लॉकडाउन अभी खैर खुद तो ऑलरेडी गया है, राइट? मोदी जी ने अनलॉक 1.0 बोला है, अभी लॉकडाउन एक्चुअली है नहीं, वी आर कॉलिंग इट अनलॉक 1.0. द प्रॉब्लम इज दैट सी व्हाट वी कॉल अनलॉक 1.0 स्टिल मींस दैट फ्लाइट्स आर नॉट ऑपरेटिंग, अ लॉट ऑफ ऑफिसेज आर नॉट ऑपरेटिंग. Even Ambe International will be opening the offices only 1 or 2 days. We are not going to keep our offices open. Whatever contact we need to do, we are going to do through telephone and through email for now. तो बाहर जाने का आप तब कर सकते हैं जब आपका सबसे पहले सिलेक्शन हो, और एक बार सिलेक्शन हो देन we will be able to send you after the flight starts. So by September, October, as even our Inco client said, things will restart, and inshallah we hope that we will all be able to send you all abroad very, very soon. Ayaz ji bol rahe hain, Vacants Safety Fire Watch in Oman or Qatar in shutdown. See, if you're currently in Oman or Qatar, as we said, please send your CVs in. We have a lot of safety officers we do need in Oman right now. But if you're in India, then you'll have to wait for some time, because abhi hamare paas India se candidates ke liye requirements nahi hai. All right, everyone. Thank you so much. Our 1 hour is up. Thank you for logging in. Ambe International में हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस टाइम में कि हम लोग आपको करेक्ट सूचना देते रहें. हम लोग आपके लिए अलग अलग क्लाइंट्स लेके आ रहे हैं. हम लोग रोमानिया से क्लाइंट्स को हमने इनवाइट किया था इधर, फिर हमने ओमान से हमारे क्लाइंट्स आए थे इधर हमारे साथ बात करने के लिए. आज इनको वाले आए थे यूएई से हमसे बात करने के लिए. द गुड न्यूज दैट आई वांट टू लीव यू विद इज दैट रिक्रूटमेंट इज रीस्टार्टिंग. हमारे पास मेडिकल पोजीशंस की काफी पोजीशंस हैं ओमान में. लोकल रिक्वायरमेंट्स हमारे पास प्रीटी मच हर कंट्री में है इस समय. आप यू कैन गो थ्रू आवर वेबसाइट www.ambeinter.com, जहाँ पे आपको सब ओपन जो हमारी लाइव पोजीशंस हैं वो दिखेंगी. आपको नीचे दिखेगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिंक, इधर आप रजिस्टर कर लेंगे तो फिर आपको ऑटोमेटिकली हमारे जॉब्स मिलेंगे. एंड इफ यू मेक योर ओन वीडियो रेज्यूमे एंड आप वो हमारे साथ रजिस्टर करते हो, क्लाइंट्स आज की तारीख में वीडियो रेज्यूमे देख के आपको सिलेक्ट कर रहे हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. Have a good day and wish you best of luck. Next Saturday we are going to come back with Gateway to Careers in Europe. हम लोग फिर से यूरोप की बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आपको बताएंगे कि यूरोप के लिए आपको कौन सी भाषाएं सीखनी चाहिए, और हम आपको रिसोर्सेज बताएंगे कि आप कैसे इन भाषाओं को सीख सकते हैं. And we also have our clients joining us from Europe who are going to talk to you about how to find jobs in Europe and how to make a long-term career. ठीक है जी. So everyone stay home, stay safe, and please take care of yourself and your family, and hopefully we will start recruitment very soon. Take care everyone.